So, sorry for the interruptions. So this is the location and the sites of the cortical implants. For all those who are already using, that's good. And for all those who are not using, I'm going to start this topic with some of the basics. So before start the basics, I just want to introduce myself. Myself, Dr. Ashish Sethi. I'm at BDS, then Masters of Immediate Loading Implantology in Switzerland. Then I did my Masters in Surgery in Implantology, then fellowship in the facial aesthetics and as well as the orthodontics as well. And I'm practicing in Chandigarh right now. And since 2009, I'm doing the implants. And from the last 5 years, I'm doing cortical implants, exclusively the cortical implants. And with experience of more than 10,000 implants in the cortical business. I'm also a founder and director of the Asim Implant Solutions Private Limited, director of the chain of the International Implant Master Clinics, and director of the International Implant Master Academy as well. So this is a bicortical implantology. Basically, this is academy which has the principles of core corticobasal implantology. And I also have a patent of myself for the implant, and I wrote the many articles in the national and international journals. So let's start the topic, the cortical implants. When we start the topic, let's see what is the index of the today's topic or today's chapter. So first we will see what is a cortical implant, and then we'll find out what are the technical differences between a cortical and a conventional implantology, and what are the cortical versus the cancellous bone, cortical versus the conventional implants. What are the indications, the contraindications? What are the types of corticals that we will read, and what are the locations for the cortical implants are there that we will study. Okay. First of all, let's see the introduction. What exactly is a corticobasal implants? Corticobasal Hello, implant sorry to disturb you, sir, but there is no audio in this. audio is not there. No, sir, there is no proper audio, sir. Audio is clear, sir. No problem. Please check, sir. Some internet issue might be. Am I audible now? Yeah, Audible, you sir. are audible, sir. Okay, Thank you fine. so much. Fine. Thank you so much. So let's start the introduction of this corticobasals. The corticobasals is a implantology which is termed as a bicortical or a cortical implantology or also called as a strategic implantology. So in the modern innovative implantology systems, the basal cortical portion of the jawbone for retention of the dental implants which are less prone to resorption and the infection free. What does it mean? Now we are calling it as a bicortical. That means we are introducing the two corticals rather than a single cortical. Whenever we place a conventional implant, in a conventional implant, what the retention we gain, what the torque we gain, that is we gain from the first cortical only. So normally when we place the implants in a cancellous bone or conventional implant which is placed in the cancellous bone, the only bone which give the torque to that particular implant, that is the first cortical. Because of that, we got an immediate torque nearly 30 to 40. But here we have to approach the two cortical, that is the first cortical and the second cortical. As you can see in this image also, the implant is going through the first corticals here that we will discuss in the later slides. And this is second cortical. So we are engaging the first and the second cortical. It is engagement of two corticals. That is why it is called as bicortical or the cortical implantology. Sometime it is also called as a corticobasal implantology that I'll discuss later. Why it is called as a corticobasal as well, and strategic implantology because we have a strategic positions where we place the implants. That is why it is a strategic implantology. So the corticobasal implantology is a modern innovative implantology because this is a basically you can say treatment option for those people who are hopeless from the conventional implantology or who are hopeless because of the very less bone or the very minor bone is there, only the jaw bone is there, only the cortical bone is less over there. So we place the implant in such a bone which bone is less prone to resorption and less prone to infection. The both things are not
very rare into the cortical bones. So question arises why we need the cortical implantology. The first question is this only. So let's find out the first of all ki when we are already doing a era of the conventional implantology, everything is going good with the conventional implantology, then why we need a cortical implantology? See, if we remember the steam engine, in the earlier time there was a steam engine that was working well. But afterwards, nowadays we are in an era of you can say the bullet trains which are running very fast because nobody has a time. At that time, we were happy with the speed of 30 to 40 kilometer per hour with the train, even with the personal cars. But nowadays, the bullet trains are running at the speed of 600 kilometer per hour. So because nobody has a time, and that speed needs perfection also. So we need a perfection with the speed. Please check in here, son. कुछ करे नहीं. Please check. We need a speed as well as the perfection. So that is why we used to need to change it, because when we working with a conventional implant, what are the problem we are facing by the time, as we're already facing, that suppose a patient came to your clinic, or suppose 10 patients came to your clinic, out of that 10 patients, the selection criteria remain only for the 3 to 4, because rest the 6 people we itself reject to the patients just because of the pneumatized sinus, just because of the less bone availability, because of the poor bone, because of the any other medical condition, the compromised condition, which is difficult, or the patient is fear from the surgery, or he is not a has a time to wait for the 3 to 4 months. There are many things that is possible. One of the major reason what I believe, apart from these, because we need a large amount, we need time, consistency, many things are required. That you know, if you are working with the implants, these are expensive as well as often required the bone augmentation procedure, bone, can say the bone grafting is required, the sinus lifting is required, everything is required in this. And if you are not a good surgeon, if you are not well versed with all these procedures, you need a surgeon for that. That is additional costing for the patient as well as for you also. So that's create a limitation for all of us as well as for the patient as well. But for me, what I believe, what is the biggest trouble? Why I prefer corticals nowadays, why I shift myself to exclusively to the corticobasal implantology from the conventional, that is one of the biggest reason is because when the patient came to me and the patient has a bone, lower bone or the upper bone now, and if the bone is suppose 3 millimeter in the width, it's a thin knife edge ridge is possible. When I saw the implants, I saw any company available. All the implants which are available to me, they are cylindrical in shape. And it is not possible for me to place these wide implants into that narrow bone, which is only 3 millimeter or 3.5 millimeter. So what happens in that situations? I need to change the morphology of the bone. Instead, I change the any morphology of the implant, I change the morphology of the bone. And how I change the morphology of the bone? By doing the ridge splitting or by doing the sinus lifting or the bone grafting. I need to do that. If I want to fix my implant, this particular implant into that narrow ridge, I need to change the morphology of the bone. That is mandatory for me. But what if the patient is not happy with that? What if we don't get that much results even after doing so much surgery? Many times it happens. Say, the doctor did a grafting, good grafting over there, but graft is failure. So again, after 3 to 4 months, we are on the same situation. It's difficult for us to give answer to the patient. That is difficult for us. So what happens? We are trying to fit a one t-shirt to everyone.
Without considering that, what is the size of that bone, what is the size of that particular person, we are trying to give the one t-shirt size to everyone. That's what we are doing in a conventional right now, because if we have a narrow ridges, if we have a pneumatized sizeness, what we are doing, we are trying to do everything one size. So otherwise, any one of you have their speaker on, please, I request to everyone to please switch on off your mic. So what we need to do it to accommodate that implant into that particular bone, we need to do the sinus lift surgery. As I mentioned, everyone is not a surgeon, so we need these procedures done by the surgeons, or patient should also give his consent as well as his financial matters for this particular surgery. Or he may have to go for the ridge splitting if we want to place that conventional implant into the narrow bone. So implant of this type do not meet the demands of all the patients at all, and actually they do not meet the demand of the treatment provides either, because the patient don't want surgery, patient want only teeth. And what we insisting him, because you have a pneumatized sinus, we need to go for a bone grafting, we need to go for a sinus lifting, or you have a thin ridge, we need to change the morphology of your jawbone by ridge splitting or by any other procedure. So most of the time, what happens when we face such type of conditions with the patient, कि हम या तो हम पेशेंट को मना कर देते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, और या पेशेंट खर्चा सुन के या पेशेंट उतनी चीजें सुन के कि अच्छा ये सर्जरी होनी है, एंड पेशेंट itself से नो. So in either conditions, one of side can say no. So because of that, out of the 10 patients, we are only able to catch only 3 to 4 patients. Out of 3 to 4 patients, again we have a fear of the failures and the surgeries. That is always there. So what we need to do if we want to take 10 out of 10 patients, number one, number two, if we want to meet the demand of the patient, then what we should do actually, then we need to change the technique, and we need to, it's a call to change the system. Because I don't say whoever is doing a conventional in your clinics, I don't say don't stop doing that. No, I would never say. So what happens when you are calling yourself as an implantologist? So what happens when the patient came to you, he has expectation that you are the person who is able to give you the teeth. And if we are a core conventional implantologist, no, I'll not go for the cortical. This is like this, without understanding the concept of the corticals. So what happened basically, कि you are not able to meet the demand of the patient. You are not running with the science what is running nowadays. तो हम पेशेंट को वो नहीं दे पाते हैं जो एग्जैक्टली हम उसको देना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज हम सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते. सो व्हाट आई बिलीव, वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. आई डिड कन्वेंशनल implants for more than 12 years. Then I shift myself to the cortical implantology. So that shift was also gradual when I saw the differences between these two, when I saw that which is more beneficial for me, that I completely shifted myself from the cortical to the conventional system. Because nowadays you have to update. Now it's a time era of the AI, and we are all learning the AI system slowly. But if we deny the AI, no, we'll not learn the AI. That means in a futuristic time, it will be difficult for you to survive now. The same way, it's a call to change the system. You have to add the system, or you can change the system, whatever your choice is. Now, how you can change the system? You just have to change the design of the implant, number one. And the number two, that you have to change the target of your bone. And why these two things are important, that you have to understand. As I mentioned you, the diameter of the most of the conventional implants are wide. Why they are wide, that is important to know, because all the two-piece implants or the conventional implants, we use to put a abutment into that particular implant, and to attach the abutment with the implant, you need to place a screw in between these two. And there should be a minimum space to place that screw to join the abutment with the implants. So it cannot be that much narrow if we want to join the abutment with the implant with the screw. So that is a problem of the design.
And if the design is cannot be become narrow, so that means if we want to place that wider implant into the patient's mouth, we need to give it by the incisions. We need to place it by giving. We need to give it by doing the multiple osteotomy, multiple time osteotomy rather than a single drill osteotomy. So when we are indulge into any surgery, we also need to take care of the sugar, BP, and other medical conditions of the patient, because the patient is a high HbA1c, again become a limitation for us. Whereas if we change the design, we not only prevent ourselves for giving extra surgical procedure to the patient, such as bone grafting or the wrist splitting or the sinus lifting procedure, but as well as we can also manage with all those patients who has a narrow ridges, who has a compromised bone, who has medical conditions such as the diabetes or other medical conditions. Because for me in the my practice, I usually do all the patients with a patient under dialysis, patient under carotid hemangioma, patient under brain aneurysm. Okay, and the diabetes, sugar, these are the regular patients with HbA1c 10, 11, 12. We manage all those conditions just because of by changing the system. And system, what changed the system? That is the design of the system. So now we have a narrow ridges, so we know that we have an implant which is even 2.7 millimeter diameter. And if it is even knife edge ridge, which has a knife edge at the apical portion, but it is still 3.5 or 4 is available, or in fact 3 is available at the base, which is usually available. So in that condition, you can use these implants to engage your bone. The second thing is we need to change the target of the bone. Instead of targeting the cancellous bone, which is prone to resorption and which is prone to infection, we place our implant into the cortical bone, which is not prone to infection and less prone to resorption. So yes, we can change the design of implant as well as change the type of the bone of the anchorage. So with the changing, now you can say why I told you that the trends it's changed. Now it is important for all of us to move with the trends and to move with the latest technologies. Earlier, we were only dependent on the osseointegration. But nowadays, it's with the help of the pinhole implantology, we have shifted ourselves to the osteofixation as well as osteointegration. The first we'll do the osteofixation. Osteofixation will give the torque immediately, and that too, it could be 70, 80 to infinity. Infinity means you will not able to give the implant or rotate the implant more than that. And later, that implant will also lead to osteointegration, which I mentioned you. Osteointegration is not a property of a particular bone, it is a property of a titanium. And the the two-piece implants are also made up of titanium, and the one-piece implant or the cortical implants are also made of titanium. And osteointegration is a property of titanium. That means after osteofixation, it becomes osteointegration. The only difference is the rough surface. The rough surface allow the osteointegration to be a bit faster, where it's a smooth surface. What we are using in a corticobasal implantology that allow a bit slow. So waiting period is 3 to 6 months earlier, but nowadays there is a no waiting period. In fact, within 72 hours, you can load, functional loading can do within 48 hours or within 24 hours or within 4 hours, it is possible. You don't have to go for any sinus lift. You don't have to go for any bone grafting. No nerve repositioning is required. And there is no rough implants is entertained into the corticobasal implantology. The many of you maybe are using the compressive implants in your practice as saying that it is a corticobasal implantology, but I'm sorry to say, guys, the compressive implants are not the cortical implants. They are exclusively the basal implants, and they follow almost all the concepts of the two-piece implantology, except that they have a single piece joint apartment. So the cortical implantology means it's a completely smooth surface implantology. There is no space for the rough implantology, no matter it is a uh, your compressive implants or any other. And one more thing, the cortical implantology, the originally what why it is originate, the original corticobasal implantology means it is infection free, it is a joint free.
So all the joint-free and all the infection-free implants, smooth surface implants, comes under corticobasal implantology, which engage only in the cortical bone or sometime in the basal. So the cortical bone and the cancellous bone, I know the differences because all read the histology and all read the first year BDS, that the outer layer of all the implants, that is basically a cortical implants. Now, this is the outer layer of all the bones are basically the cortical bone, and inside that is a cancellous bone. And cancellous bone is softer, and outer bone is a cortical bone, which is always a harder bone. The cortical bone is highly mineralized, that is why it is a less prone to infection and the resorptions. And cancellous bone, which has a Harvesian system and the more blood vessels, it is a you can say very soft and it's a prone to resorption for them. And it is located in the medullary cavity, as we know. The cortical bones are very dense and very solid bone. Now, if we see in this, it's the lower bone. This is a alveolar bone, or we can say the first cortical lies over here. And this softened part inside is your cancellous bone, where we two-piece implants are placed. All the two-piece implants are placed over here. And all around this hard bone is the cortical bone. So if any patient or any doctor thinks that the cortical implant or the cortical bones are placed only in the deeper part or only in the layer where there is a hard bone at the apex only, you're wrong. The cortical bones are available all around. The center part is your cancellous bone or the trabecular bone. Now, another difference what you should know is about what is the difference in the woven bone as well as the lamellar bone. Why this is important to make you understand why there's a lamellar bone, the woven bone is important for us to understand in the cortical implantology. So, check it. Why it is important? Because whenever we place a two-piece implantology and we wait for the osseointegration, during the osseointegration, Kindly mute. okay. So during the osseointegration, whenever we wait for the 3 months, at that time, the gap in the interface between the implant and the bone is more, and that gap is filled, by the bone, which is called as a woven bone, which is a soft bone. And that soft bone needs 3 to 4 months to become harder. So that is why osseointegration is an integral part of the two-piece when the woven bone will form, and later that woven bone will convert into the lamellar or a much harder bone. Then only we can give a functional loading into the two-piece implantology. But in cases of cortical implantology, we don't want to be formed, the woven bone to be formed. We want the lamellar bone to be formed, only the lamellar. That is why we place the cortical implant at a higher top where the gap or the interface between the implant and the bone should be minimum. That is why it is a single drill system only. That is why only 2 millimeter or the 2.5 millimeter drill is placed and 3.5 or the 4 millimeter implant are put into that. Because we want a minimum gap or the minimum interface between these two. When there is a gap or the interface is a minimum, so what will happen? The lamellar bone formation or the primary healing will happen rather than a secondary healing will happen. In the woven bone, secondary healing happens. In the cortical bone, primary healing happens, or we want primary healing and we want the lamellar bone to be formed. So this is the difference in between these two in the cortical and the conventional implant. But if you make a circumstances, if you make a condition like this after placing the implant or before placing the cortical implant or after placing the cortical implant, if you make a condition something like this, that instead of primary healing, there is a secondary healing.
happens into a cortical implant. That means instead of formation of lamellar bone, if there is a formation of woven bone in the cortical implant, that implant lead to be failure. वो इम्प्लांट कभी सक्सेस नहीं होगा. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो सभी स्टेप्स, वो सभी प्रोसीजर्स फॉलो करें कि जहां पे फॉर्मेशन ऑफ लैमिलर बोन हो, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ बाय द हीलिंग बाय द प्राइमरी हीलिंग हो. तो आपको वो सभी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. इफ यू मिस वन स्टेप where the primary healing will happen, then the implant will go into failure. That is one of the biggest reason of the failure of the cortical implants. Now we see basic differences whenever we talk with the patient or whenever we talk with the doctor. बहुत बार patient आके पूछते हैं कि सर मैंने वो implant के बारे में जाना, cortical conventional वाले, कि क्या differences है इसमें उसमें. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम patient को बहुत layman language समझा देते हैं कि नहीं जी वो जल्दी हो जाएगा, लेट हो जाएगा. बट आइडियली व्हाट आई बिलीव, जब हमें भी अपने दिमाग में एक बहुत कंसेप्चुअली चीजों को डिफरेंशिएट करना चाहिए और पेशेंट को भी बहुत कंसेप्चुअली इस चीजों को समझाना चाहिए. एज आई मेंशनड यू, आई एम practicing in Chandigarh and most of my patients, 80% are NRIs, and what happens, they are already very well knowledgeable with the internet, Google, और their family members, सभी से बहुत ज़्यादा उनको ऑलरेडी नॉलेज मिली होती है. तो उन पेशेंट्स को यहाँ बैठ के समझाने का मतलब होता है कि आप उसको बहुत इन डेप्थ नॉलेज उसको पता है. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट व्हाई यू आर प्लेसिंग अ कॉर्टिकल इम्प्लांट्स इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल इम्प्लांट्स. So this will give you some idea that how you can make your feedbacks for yourself, as well as how you have to understand, make the understand to the patient that how you can make a difference. So first of all, I always make the patient understand that we are putting the implants into the cortical bone or not in the cancellous bone, which is conventional implant placed in the cancellous bone, which is softer. We are here dependent on the osteofixation and osseointegration rather than only osteointegration. That means because we are osteofixated the implant, इसीलिए हम उसको immediate functional loading कर सकते हैं. हमारा torque 90, 100 और infinity पे जाता है, and even at that torque we are able to load the implant, we are able to give a functional loading to the implant. Whereas क्योंकि हमें यहाँ पे lamellar bone formation करनी है, इसलिए बहुत high torque चाहिए. Whereas वहाँ पे soft bone में है and it is not integrated, it will take 3 to 4 months. We are not able to put the immediate loading. I already mentioned the cortical implants are always healed by the primary healing rather than a secondary healing. We need a primary healing. If there is a secondary healing in this cortical implants, we are failed. Lamellar and the woven already mentioned. And we are doing an immediate loading within 72 hours. Why immediate loading? Because we are getting a osteofixated into the cortical bone, and with the ossifixation at a high torque, we can transfer the forces directly from the prosthesis to the cortical bone to the buttresses. Whereas uh, in the conventional implantology, we need 3 to 6 months until unless that become osteointegrate. We are always using a smooth surface rather than a rough surface. We are always using a single drill system. We are not using multiple drill system, only and only single drill system we are using. And there's no incision and no suture is required. No complex procedures required for the medical compromised patients because there's no suture and the no, I mentioned incisions are there. In the conventional implants, I think it's mentioned mistakenly, ulta ho gaya. In the conventional implants, we can only give HbA1c up to 7, whereas in a cortical implants, ideally it is mentioned 10, but practically we can go up to 11, 12. I did the cases where the patient HbA1c was 12.5. We don't need any bone grafting over here. We need a bone grafting over here. Okay. Now we come to the applied anatomy. Call the pro. Okay. What is a basal and what is a cortical bone? Now this is also important to understand कि हम लोग बोलते हैं it's a cortico-basal implants. ठीक है? Within 10 minutes going to walk into colleagues. So within 10 minutes, sorry, we need a cortical as well as a basal bone. It is important to understand it is called as a cortico-basal implant rather than a basal. I mentioned you all the two pieces implants. They are not the
basically cortical implants, because the rough surfaces जो compressive implants होते हैं, they are usually not placed into the cortical, or even they are not allowed to cross the corticals. They are placed into the most into the basal bone. Basal bone जो होती है, this is first bone, that is the alveolar bone. Then you have a basal bone. Then you have a cortical bone. जैसे जैसे mineralization increase होता रहेगा, वैसे वैसे bone का texture change होता रहेगा, and that is why it's called as a basal bone. Alveolar bone और basal bone की density में increase आता है, because the density increases in the alveolar to basal bone. जितनी भी बेसल बोन होती है, हमारी जो रूट्स ओवर होती हैं टूथ की, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अपर एंटीरियर्स की, अपर एंटीरियर की रूट जहां पे ओवर हुई, हम कभी भी ग्रैनुलोमा फील करते हैं कि किसी भी टूथ में इन्फेक्शन हो गया, ग्रैनुलोमा है, दैट ग्रैनुलोमा विल टेक एक मिनट ऑलमोस्ट भाई, वो आया नहीं। 2 to 3 मिलीमीटर का ग्रैनुलोमा हमारे पास होता है। और ये जो 2 to 3 मिलीमीटर का ग्रैनुलोमा होता है, वहीं तक का ही बोन रिजॉर्प्शन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिलता है, एंड दैट बोन इज अ सॉफ्ट बोन। And any bone which is beyond that 3 to 4 millimeter, that is a basal bone. So जहां पे इन टूथ की रूट्स ओवर होगी, उस टूथ की रूट से 3 से 4 मिलीमीटर नीचे जाकर के आपको बेसल बोन होना स्टार्ट होगा। इसलिए कभी भी कॉर्टिकल इम्प्लांट आप डालते हैं, यू शुड नेवर प्लेस द इम्प्लांट एट द लेवल ऑफ योर टूथ रूट। अगर आपने उसको टूथ रूट के लेवल तक डाला है, that means you place the implant only and only in the alveolar bone. You are not placing into the basal or the cortical. So there are the basically three types of the cortical: the first cortical, the second cortical, and the third cortical. The color dark हो गया है. Okay. Now let's see what is there. This is your alveolar bone. This is your first cortical. This area along the papilla, that is the first cortical, जहां से हम लोग conventional implant का torque लेते हैं. And afterwards, this is the complete alveolar bone. And afterwards, 4 to 5 millimeter beyond that, there is a starting of your basal bone. And beyond this basal bone is your cortical bone. So mineralization will increase. If you can see the dotted signs over here, that indicate this is a bit softer bone. And beyond that, as we go move upward, 4 to 5 millimeter, that is called as basal bone. And beyond that, that is a cortical bone. So this is how we differentiate the bones. The where is alveolar? There is the first cortical at the crest. Then we have alveolar bone. Okay. Then we have a alveolar bone at the apex, and then we have a basal bone. Then we have a cortical bone. So this is your first cortical, and this here is your second cortical. So there are the three types of cortical: the first cortical, second cortical, and third cortical. The first cortical lies at a papilla only, and the second cortical at the this level only. The examples of second cortical we'll see further. Now, first understand what is a third cortical. The third cortical is a bone which we are using to take part. हम किसी बोन का यूज कर रहे हैं इम्प्लांट को एंगेज करने के लिए, लेकिन वो बोन इम्प्लांट उसका पार्ट नहीं है, मैक्सिला का पार्ट नहीं है. दैट मीन्स the bone which is not a part of maxilla, still we are placing the implant into that bone to take an anchorage to give a fixed prosthesis. For example, if we are placing an implant into the pterygoid, this is a pterygoid. Pterygoid is part of a sphenoid bone. It is not a part of maxilla, but still we are placing an implant which is called as a pterygoid implant, मुंह में दांत लगाने के लिए. So that is called as a third cortical. So all the third corticals are here. This is a pterygoid. This is your zygoma. Zygoma is also separate but not a part of maxilla. Still we are using to place the implant to give a prosthesis to the patient. Lateral wall and the lower wall of the eyelid. This is also a cortical and used as a third cortical. Rarely used as a third cortical. So just to give a break, we are going to start our next fellowship course in Vietnam. This is earlier course which is we did in Malaysia, and now the next course of the fellowship is going in Vietnam. Just a small break for all of you.
क्योंकि इतना टॉपिक आपका हो कि आई थिंक काफी फेडअप हो गए होंगे। सो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें वियतनाम के लिए फेलोशिप के लिए, दे कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर दैट। So next move further to our main topic. By the time we have understood what are the corticals, corticals हम देख लिए कि अलग अलग तरह के corticals होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने बोन देख ली, अलग अलग तरह की बोन है, कॉर्टिकल कैंसरस हमें कॉर्टिकल में डालना है। हमने वन पीस एंड टू पीस में डिफरेंशिएशन देख लिया कि कॉर्टिकल और कैंसरस में डिफरेंस रहता है, कि हम कॉर्टिकल्स के अंदर कॉर्टिकल बोन में कॉर्टिकल इम्प्लांट डालते हैं जो कि स्मूथ सरफेस होते हैं, कन्वेंशनल में कन्वेंशनल डालते हैं जो कि रफ सरफेस होते हैं। Now let's see what are the exact locations for the cortical bone कि जहाँ पे हम cortical implants डालते हैं। जो प्रीमोलर थे यार, सिटी का तो मैंने पूछा ही है। Now first in the we can see into the maxilla as well as in the mandible. So first of all, let's see in the maxilla. So in the maxilla, sorry. Just a second. So in the maxilla, these are the different sections that you can see. In the anterior wall of the maxilla, anterior portion of the maxilla, we can divide the maxilla basically into three parts: anterior part, middle part, and the posterior part. Anterior part of the maxilla basically वो part होता है जो कि anterior wall of sinus से मिड लाइन तक आता है, और आई वुड से anterior wall of sinus to anterior wall of sinus तक हमारे पास आता है. That part is basically called as a the anterior part. तो इस anterior part के अंदर हम लोग किस किस लोकेशंस के अंदर डालते हैं, जस्ट अ सेकंड. Anterior posterior. So what are the locations we have? We have the location. Can you see this nasal floor? Can you see this floor? This floor is called as a nasal floor. And this nasal floor, if you see, this is the anterior wall of sinus, this is anterior wall of sinus. In between these two, this floor is the nasal floor, and this part is the nasal spine. And this is the main cortical engagement for the placement of implant in the maxillary anterior region. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है मैक्सिलरी एंटीरियर पार्ट का, कि हम लोग नेजल फ्लोर या नेजल स्पाइन को एंगेज करते हैं. इफ यू विल सी द this nasal floor is making the palate as well, the like the we can say the roof of the palate is formed by the nasal floor. So हम लोग बेसिकली पैलेटल एंगेजमेंट करते हुए इस नेजल फ्लोर के ऊपर एंगेजमेंट करते हैं. So the maxillary anterior region, nasal floor is the first important location जहाँ पे हम लोग अपना implant डालते हैं. Okay. In the different sessions, we can say when we come to the premolar region, premolar, this is a premolar session basically. In the premolar area, जैसे हम पीछे जाएंगे, again we still have a nasal floor. लेकिन यहाँ पे premolar की रूट को फॉलो अगर आप करेंगे every time, it is possibility कि आप साइनस में चले जाएं. So there is by keeping our drill bit palatal, again you will engage into the nasal floor. Nasal floor ऐसा नहीं है सिर्फ आगे आगे होता है. If you see the nasal floor in this picture, the nasal floor spread from anteriorly to the posteriorly. But the only difference is the anteriorly to posteriorly, the thickness or its the variations found in the in its strength. Anterior region में if you can see it's a very much thick, so most of the time in the anterior region में हम लोग nasal floor के अंदर engagement बहुत अच्छा मिलता है. इसीलिए maximum implants maxillary sinus के आगे आगे अगर आपने कभी भी cortical के देखे होंगे, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम इम्प्लांट डाले जाते हैं, विच इज नियरली 4 in numbers. सो यहाँ से यहाँ तक हम 4 in numbers इम्प्लांट डाल रहे हैं. सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, एक्चुअली इट वाज अ टेक्निकल एरर. ओके, एवरीवन इज एबल टू लिसन मी? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Am I audible to everyone? Am I Yes, audible sir. to everyone? Please, आप चैट में बता सकते हैं. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Okay, so in the anterior region, the maximum implant what we have placed that is into the nasal floor, and that too
the anterior wall of this sinus to the anterior wall of this sinus region. That is the maxillary anterior region. And this sinus or the ये sorry, देखना इतनी थिकनेस है। and this nasal floor that is spreaded from anteriorly to posteriorly. सबसे ज्यादा थिक कितना है, होता है कितना मोटा है? anterior region. Sir, please, one of you have their mic is on. Please switch off your mic, please. नहीं आ रही। Okay. In the premolar region, we have to see that this is the bone. Is this bone is available here or not? Otherwise, जब sinus अगर यहाँ तक extended होता है, तो sometime it is difficult for us to reach till nasal floor. That what we have to see कि कई बार cortical implant डालने में या conventional डालने में सबसे बड़ा target या दिक्कत क्या आती है कि हम इस nasal floor को engage करना चाहते हैं from this entry point. लेकिन अगर ये sinus यहाँ तक pneumatized है, then it become difficult or the डॉक्टर सनम का क्या दिक्कत हो रही है? ओके, वापस से now, again, you can see in another picture. This is your sententizer. So this sententizer is near to the nasal floor. So if we want to extract the tooth and if you want to place an implant, you just have to remove it, and only this much drill you have to do to enter into the nasal floor. And once you enter into the nasal floor, that means the osteotomy is over. That's a single drill system what we required over here. And this nasal floor, again, you can see it's a tapering from anteriorly to the posteriorly. That is why anteriorly, the more implants are placed into the anteriorly. Again, in the premolar region, now this sinus is more pneumatized than earlier. What I show you in the last slide, that was, there was a too much space and it was easy to approach the nasal floor. But here in this slide, if you will see, this space is very less. So if you want to engage the nasal floor, you have to maintain your or angulation to enter into the nasal floor. Even if this sinus is more pneumatized than this, then it is a possibility then you have to go transsinus to engage the nasal floor. So this is how you should know your target and how you will achieve the target. That is important. But right now we are discussing only the locations because the planning and all of the things that we will discuss into the later classes. So in the location, the anterior region, the nasal floor, nasal spine is the most important location for the maxillary anterior region. In this slide also you can see this is the reason where we have to engage the cortical implants. Now, if we talk about the posteriorly, if you'll see, behind the anterior wall of the nasal sinus lining, behind the anterior wall of sinus lining, this is the posterior wall of sinus lining. So that means there is a zone B where the sinus is present over here. And this is behind this posterior wall of this sinus lining is the zone C, or the we can say the posterior region. In the maxillary posterior region, the bone what we engage is the pterygoid bone, and this bone is the pterygoid. This is the posterior region where we engage the implant. So anteriorly, I mentioned you have to engage your implant into the nasal floor. Posteriorly, you have to engage the implants into the pterygoid area or the pterygoid bone. That this pterygoid bone is a part of your sphenoid bone, as you can see over here. So this is the posterior region where we engage the bone, which is the pterygoid region. And this is the anterior, the nasal floor where we engage the bone. Anteriorly, it's a nasal spine also. And the mandible, if you'll see, in the mandible, we have a different locations. See, first of all, look at this picture. In the mandible anterior region, you have a very thick bone over here, and this the whole bone is mostly a cortical bone in the mandible anterior region. So in the mandible anterior region, it is important कि आपका
जो इम्प्लांट है वो टूथ की रूट से नीचे हो, टूथ की रूट से 3 से 4 मिलीमीटर नीचे, दैट इज ऑल योर the basal or the cortical bone only. That is all your cortical bone only. This is the whole bone is your cortical bone. And how we determine कि किस area में हमें implant डालना है in the mandible anterior region. Now this is important. If you can see, if you can see, this is your foramen and this is your midline. You should place the implant in between the you should place the implant in between the foramen to the midline. This is your anterior region. And behind this mental foramen is your posterior region. So in the anterior region, you have to place the implant from mental foramen to the midline, or we can say interforaminal region. From this foramina to the foramen of the another side, you place the implant, that is the interforaminal region. And this region is a highly corticalized, highly mineralized area. So in the anterior region, you place your implant in the interforamina region. This is interforamina region. And behind this mentor foramina, we place the implant posteriorly. अब anteriorly तो बता कर लिया कि हमने interforamina region में जाना है, that too into the center of the bone. पोस्टीरियरली किस लोकेशन पे हम लोग डालेंगे इम्प्लांट? पोस्टीरियरली हमारे पास, इफ यू कैन सी, दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज ऑन द बक्कल साइड, एंड this is a mylohyoid ridge in this picture on the lingual side. So this external oblique ridge in the buccal side, and this is a lingual mylohyoid ridge in the lingual side. Both of these sides are cortical side in the mandibular posterior region. So in a simplified way, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैंडिबल एंटीरियर रीजन में आपने इंटरफोरामिना रीजन में इम्प्लांट डालना है, और वन क्वाड्रेंट अगर बात करूं तो फोरामिना से मिड लाइन के बीच में 4 इम्प्लांट आप लगभग डालते हो, 3 से 4 इम्प्लांट यहाँ पे आप प्लेस करते हो, ठीक है? डिपेंड्स, 4 नहीं, सॉरी, 3 इम्प्लांट्स और समटाइम 2 इम्प्लांट्स, 4 बोले तो दोनों साइड मिला के। ओके, सो पोस्टीरियरली आप मिनिमम 2 इम्प्लांट डालते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि पोस्टीरियरली आपने मिनिमम 2 इम्प्लांट डालने हैं, एंटीरियरली फोरामन से आगे आपने 2 से 3 इम्प्लांट डालने हैं. So this is how we plan in a mandible for a cortical implant. So locations are anteriorly foramen to midline, posteriorly external oblique ridge or the mylohyoid ridge. Okay, this is the anterior and the posterior. जब लिंगुअल कॉर्टिकल आप डालते हैं या लिंगुअल साइड में माइलोहेड रिज को आप एंगेज करते हैं, तब आपका दिस सब मैंडिबुलर ग्लैंड का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज हम लोग दिस इज अ माइलोहेड रिज ओवर हियर एंड वी प्लेस द इम्प्लांट टिल्ट पोजीशन में यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पे आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड आती है जो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है. वो जब हम आगे प्लानिंग्स में आएंगे तो आपको डिस्कशंस में आ जाएगा. दिस इज योर माइलोहॉइड. यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिख रहा है, जैसे माइलोहॉइड मसल का अटैचमेंट से यहाँ रहता है, तो आप इम्प्लांट यहाँ से डालते हो और यहाँ पे आप एग्जिट करते हो, इस जगह से आप एग्जिट करते हो. जब आप इस जगह से एग्जिट करते हो फ्रॉम द डिस्टल रूट ऑफ 6 से माइलोहॉइड के नीचे, आप दिस होल बोन इज अ वेरी कॉर्टिकल और हाईली कॉर्टिकलाइज्ड बोन. यहाँ पे आपको ये ग्लैंड का टेक केयर करना. तो ये आपको मैंने पिक्चर्स क्यों बता दिया, अब थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे आपको बता रहा कि इम्प्लांट पोजीशन को हम लोग एंटीरियर रीजन, फोरामिनल रीजन, पोस्टीरियर रीजन हम इसमें डिवाइड करते हैं. मैक्सिलरी की बात करें तो दिस इज योर एंटीरियर रीजन, दिस इज योर फोरामिना और वी कैन से द साइनस रीजन, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर रीजन जिसको हम करते हैं. तो मैक्सिला को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन. एंटीरियर रीजन में कौन कौन सी लोकेशन है जहां पे हम इम्प्लांट डालेंगे? तो नंबर 1 इज योर नेजल फ्लोर, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं. नंबर 2 इज योर नेजल स्पाइन, दिस वन. नंबर 3 इज योर कैनाइन पिलर, दिस इज योर कैनाइन पिलर. कैनाइन पिलर में बेसिकली क्या होता है कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग पिलर जो आपका एज अ वर्टिकल पिलर की तरह भी काम करता है, तो आप डायरेक्टली इस कैनाइन पिलर के अंदर भी इम्प्लांट डाल सकते हो. The fourth is a rab. Now, what is a rab? The rab is also called as
the residual alveolar bone. Now, what does it mean? This is your nasal floor. And if you can see, this is your nasal floor. The root ends here. That means the root ends almost here. That means here, the root ends almost here. Okay, now what happens? That any bone which is present in between the root and the nasal floor, ये जो बोन होती है, ठीक है, रूट से आप 3 से 4 मिलीमीटर छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज वहां तक बोन रिजॉर्बेबल होती है। 3 से 4 मिलीमीटर छोड़ के उसके ऊपर की जो बोन होती है और नेजल फ्लोर के बीच की बोन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसल बोन। दैट मीन्स इट लाइज समवट लाइक हियर, जहां पे आपकी रूट्स भी एंड हो गई हैं और उसके 3 से 4 मिलीमीटर ऊपर और नेजल फ्लोर से पहले, दिस इज योर बेसल बोन। इस बेसल बोन में आपका कभी ये भी मिनरलाइज्ड होती है और काफी हाईली मिनरलाइज्ड रहती है। अगर आपका इम्प्लांट कभी कॉर्टिकल इम्प्लांट यहाँ रह जाए, ठीक है, आइडियली दैट इज नॉट अ टारगेट बोन, बट अगर कोई बोन यहाँ पे रह जाए ड्यू टू वेरी मच हाई टॉर्क और वहां पे अप्रोच नहीं कर पा रहे फ्लोर को, इवन दैट इज ओके, बट द टारगेट इज टू perforate this cortical bone and to engage the cortical bone. So in the A region, you have a nasal floor, you have a nasal spine, canine pillar और this rab area, और जिसको हम residual alveolar bone बता रहे हैं या जिसको हम लोग basal bone कह रहे हैं, that is a basal. Another question, why this basal bone or this this lining is in green whereas this lining in the sinus is a red? Now this is important. Why these linings are important? ये जो लाइनिंग आपकी है, ग्रीन लाइनिंग आपकी डिनोट करती है कि दिस इज अ स्टेबल कॉर्टिकल, ये कॉर्टिकल आपकी स्टेबल है। रेड लाइनिंग डिनोट दैट दिस कॉर्टिकल इज नॉट अ स्टेबल, दैट मीन्स ये रिजॉर्वेबल है, ये कॉर्टिकल आपकी श्रिंक कर सकती है, इसीलिए हम लोग इसको अनस्टेबल कॉर्टिकल बोलते हैं। इसीलिए कोई भी इम्प्लांट हम लोग साइनस रीजन की कॉर्टिकल के अंदर डाल के नहीं छोड़ते। कॉर्टिकल एंगेज कर रहे हैं तो सिर्फ वो एक वाइड बॉडी या टेम्परेरी इंप्लांट होगा जो कि सपोर्ट देने का काम करेगा, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक इंप्लांट। अगेन पोस्टीरियरली यहाँ पे टेरिगोइड डला है, दिस इज अ ग्रीन, दैट मींस इट्स अ स्टेबल कॉर्टिकल। दिस इज द maxillary anterior region. Next we talk to the maxillary. Okay, if you can see, दिस इज योर नेजल फ्लोर। नेजल फ्लोर इतना थिक रहता है और यहाँ पे परफोरेशन बाहर आती हैं, लाइक इफ आई एम मार्किंग ओवर हियर, द परफोरेशन कम आउट फ्रॉम हियर। यहाँ जो परफोरेशन बाहर आती हैं, द टिप ऑफ इम्प्लांट इज राउंडेड ओवर हियर। आई नो सर्टेन कंपनीज का जो टिप है बहुत शार्प आता है, विच आई नेवर रिकमेंड, दैट शुड नॉट बी देयर। यहाँ पे अगर हल्का राउंडेड होगा, इम्प्लांट बाहर आता भी है यहाँ पे, तो यहाँ की म्यूकोसा को हिट नहीं करता है, हर्ट नहीं करता है, तो ब्लीडिंग आपकी नहीं होती ना। अदरवाइज समटाइम क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट शार्प टिप ऑफ द इम्प्लांट, म्यूकोसा को इतना हिट करता है, इतना ब्लीडिंग हेमाटोमा हो जाता है कि पेशेंट की ब्लड क्लॉटिंग नाक से और मुंह से बहुत आती है। सो दिस इज द फ्लोर वेयर, ये फ्लोर एंटीरियर टू पोस्टीरियर है, यहां से इम्प्लांट हमने डाला एंड वी कम आउट फ्रॉम हेयर। दिस इज हाउ वी प्लेस इम्प्लांट। Now, in this pictures, if it is X-ray pictures, if you will see the root top, if you have heard into the ortho कि root का top positive negative होता है, प्रीमोलर की बक्कल रूट नेगेटिव टॉप पे होती है, प्रीमोलर की जो पैलेटल रूट होती है बिट पॉजिटिव टॉप पे होती है। तो अगर आप पैलेटल रूट को फॉलो कर रहे हैं तो दैट मींस यू मे कम इनटू द नेजल फ्लोर। बट अगर आप बक्कल रूट को फॉलो करके अगर आप सोचते हैं कि आप नेजल फ्लोर पे आ जाएंगे, यू आर रॉन्ग, यू मे एंटर इनटू द बक्कल साइड और द आउटसाइड ऑफ द मैक्सिला। तो इसकी वजह से बहुत बार डॉक्टर से कॉल आते हैं कि डाल रहे हैं वो पैलेटल म्यूकोसा में नहीं जा, सॉरी नेजल फ्लोर में नहीं जा रहा, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग द बक्कल रूट तो आप बक्कल साइड से बाहर आ जाएंगे, यू आर नॉट एंटरिंग टू द नेजल फ्लोर। नेजल फ्लोर जो रहता है वो थोड़ा सा पैलेटल साइड में आपका रहता है, आपको डायरेक्शन थोड़ी टुवर्ड्स पैलेट की तरफ रखनी पड़ती है। दिस इज द अपर एंटीरियर।
जहां पे हमने नेजल फ्लोर को एंगेजमेंट करा, दिस इज योर नेजल फ्लोर, हाउ वी एंगेज द नेजल फ्लोर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे, सेम इन द लोअर। मैंडिबल मिडल रीजन की बात करें, एज आई मेंशन साइनस रीजन, साइनस रीजन के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सम टाइम फॉर द मेनी ऑफ द डॉक्टर्स। वो बहुत परेशान होते हैं कि भी मैक्सिलरी रीजन को कैसे हैंडल करें। तो आई एम टेलिंग यू, अभी सिर्फ अब लोकेशंस हैं बिकॉज लोकेशन का टॉपिक है। व्हेन वी कम टू द प्लानिंग टॉपिक, आई थिंक दैट इज टेकन बाय डॉक्टर हरमन आई सपोज, तो शी विल एक्सप्लेन यू कि मैक्सिला के रीजन को हम लोग जब हैंडल करते हैं, व्हाट आर द 6 वेज, देयर आर 6 वेज हाउ यू मैनेज द मैक्सिलरी साइनस रीजन। उन 6 रीजन के अंदर आपको अलग अलग तरीके बताएंगे कि साइनस रीजन को आपने कॉर्टिकल एंगेजमेंट कैसे करना है, कैसे हैंडल आउट करना। एंड द पोस्टीरियर रीजन, वी नो दैट इज द टेरिगोट। So that is what I want to try to explain you. These are the different routes. ये आपकी प्रीमोलर की बक्कल रूट है। बक्कल रूट को अगर आप फॉलो करेंगे, वी नो द फ्लोर इज हेयर, ये पैलेटल रूट आपका है। पैलेटल रूट के भी हल्के से पैलेटल जाएंगे तो आप यहाँ एंटर करेंगे। बक्कल रूट से आप सीधा बक्कल साइड में निकल जाएंगे तो वहां पे आपको एंगेजमेंट्स नहीं मिलते हैं बहुत अच्छे। दैट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये रूट के जो आपको एलिवेशंस दिख रहे हैं, दीज रूट्स आर इन अ नेगेटिव टॉक। तो इसकी बक्कल रूट नेगेटिव टॉक में है तो यू मे कम आउट फ्रॉम हेयर। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बार अच्छा टॉर्क नहीं मिलता, क्योंकि हमारा टारगेट शुड बी टुवर्ड्स पैलेट, नॉट टुवर्ड्स द बकल। दिस इज हाउ वी मैनेज और एंगेज्ड। मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन कहाँ पे हम लोग एंगेज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लोकेशन। द नंबर वन लोकेशन पैरेटल रूट। नाउ दिस यू कैन सी, दिस इज योर मोलर। इन द मोलर रीजन, molar we have 3 roots. Okay, we have medial buccal, distal buccal and palatal. The palatal root जो आपकी है, वो उस palatal root से हम लोग फॉलो करते हुए we can enter into the nasal floor. This is a nasal floor. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका nasal floor anterior to posterior रहता है। तो ये जो नेजल फ्लोर का एरिया है, इस नेजल फ्लोर से हम लोग सीधा, सॉरी, पैरेटल रूट से नेजल फ्लोर को एंगेज कर सकते हैं। बट सम टाइम अगर वो नेजल फ्लोर एंगेज नहीं हो रहा तो हम अपने इम्प्लांट्स को पैलेटल रूट में भी छोड़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो इन सभी की डिटेल्स जब हम लोग पढ़ेंगे आपके प्लानिंग वाले के पार्ट में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि साइनस रीजन को हम लोग जब एंगेज करते हैं 6 वेज कैसे हैं, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियरली सबसे मेन जो टारगेट हमारा रहता है दैट इज योर टेरिगॉइड, कि हमें टेरिगॉइड को अप्रोच करना होता है, कैसे हम करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास बहुत अच्छी पोन अवेलेबिलिटी होती है तो हम यहाँ से नेजल फ्लोर को भी एंगेज करते हैं और पैलेटल रूट को भी एंगेज करते हैं। तो दिस पैलेटल रूट से हम लोग पैलेटल को एंगेज कर देंगे। बक्कल रूट से अगर हम कभी भी एंगेज करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, इसलिए बक्कल रूट में अगर डालना है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट बॉडी इम्प्लांट डालते हैं, ताकि वो सिर्फ इसी कॉर्टिकल्स को, बक्कल कॉर्टेक्स को ही एंगेज करे। तो बक्कल कॉर्टिकल से अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो इट विल कम आउट। थर्ड मोलर से, दिस इज द थर्ड मोलर और द सेकंड सेवन, सेवन से या थर्ड से हम लोग टेरिगोइड को एंगेज करते हैं यहाँ से। दिस इज अ टेरिगोइड एंड दिस इज हाउ वी एंगेज द टेरिगोइड ओवर हियर। दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज फ्रॉम द पैरेटल साइड। तो ये हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग इम्प्लांट डालने की टेक्निक यूज करें। Now see, this is a pterygoid and this is from the palatal side to the nasal floor. ये आपको व्हाइट लाइन एंगेज हो रही है, दैट मीन्स द नेजल फ्लोर। और हम पैलेट के रास्ते से गए हैं। पैलेट के रास्ते से जाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस रास्ते पे गए हैं, दिस वन, कि हमने पैलेट से चूज करा और हम लोग नेजल फ्लोर पे एंगेज हुए। दिस इज द वे दैट वी एंटर्ड। ओके, दिस इज हाउ वी एंगेज द नेजल फ्लोर। और टेरिगोइड मैंने बताया, थर्ड मोलर से हम लोग पीछे की तरफ फास्ट, लेफ्ट टू बैक में, दिस इज द चार्ज फास्ट। इसका प्लग इन आगे वाला अंदर ही होगा, डायरेक्ट लग जाएगा, डू इट फास्ट मैन। प्लग इन, जस्ट सिंपल दैट्स ओके। Okay, so this is posteriorly we engage the pterygoid. This is how we engage the parietal. This is what I demonstrate you in this OPG. ये चाय पीने का।
इस प्रेजेंटेशन को हटा के वापस चालू करेंगे। Unmute. Just a second, guys. The presentation आ गई ना, I think कुछ मूव नहीं कर रही है, तो I have to like restart this presentation. अटक गई है।
Yes. Okay, so ठीक है यार, नहीं next item. What is the next item? It should be. So this is how we engage the posteriorly, this pterygoid as well as the parietal guide. Now again, these are the इसको again, in this case, if you can see, this is the pterygoid what we have placed, and this is the from the palate to the nasal floor we have engaged. This is another implant that we have placed. ये इम्प्लांट बक्कल में डाला हुआ है। बक्कल के अंदर तो मैंने आपको बताया कि बक्कल से हम लोग एंगेज नहीं कर सकते हैं, दैट विल डिफिकल्ट फर्स्ट, क्योंकि वो नेजल फ्लोर नहीं जाएगा। तो उसको हमने पैरेटल से एंगेज किया, बक्कल में वाइट बॉडी डाला तो कैसे बक्कल कॉर्टेक्स को एंगेज करेगा। तो दैट्स हाउ वी एंगेज्ड इट। Next, come to the mandibular anteriors. Mandibular anteriors, I already mentioned you that we have to go the interforamina. This is the interforamina region, foramen in between foramen to foramen. Either we place a 4 implant or we place a 6 implants. When we place a 4 and when we place a 6 implants, that we will discuss into the planning topic. But the important part is the location that we have to place the implants in the mandible, which is a interforamina region. So interforaminal reason, we can place the implant vertical, we can place the implant angulated form, or sometimes we can also place up to the base of the mandible. So these are the different locations. This is the interforamina, foramen between foramen to foramen that I already mentioned you. This is a posterior view of the mandible where this is, you can see this is a mylohyoid ridge over here, and we exit the implant below this mylohyoid ridge, below this mylohyoid ridge. This is again an interforaminal region. इनसे दिस इज, यहाँ पे हमने जो इम्प्लांट डाल रहे हैं ये रूट से काफी नीचे है। इफ यू कैन सी, इफ आई प्लेस द इम्प्लांट जस्ट 2 to 3 millimeter फ्रॉम हेयर, दैट मीन्स आई एम रॉन्ग। मेरी टिप उससे नीचे जानी चाहिए, देन आई एम राइट, तब हम प्रॉपर कॉर्टिकल बोन के अंदर हैं। Now this implant is in a basal, this is the root end here, that means the alveolar bone ends here, but this implant into the basal bone over here. It's not engaging completely। 27 millimeter का implant already है, this is a 27 millimeter length। इससे ऊपर डालना that was not good, तो यहाँ पे हम लोग डाला हुआ है। मैंडिबल मिडल रीजन की बात करें, मैंडिबल मिडल रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है दैट इज योर फोरामन, कि जो फोरामन का एरिया होता है मेंटल फोरामन में, वो मिडल रीजन में आता है। एंटीरियर रीजन में इंटरफोरामिना डाल दिया, पोस्टीरियर रीजन में हमने आपको बताया या तो बक्कल कॉर्टिकल में एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज में या लिंगुअल कॉर्टिकल में माइलोहाइड के नीचे डालोगी। मिडिल रीजन में जब कभी भी फोरामन होता है वहां पे हम सिर्फ व्हाइट बॉडी डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते। ये व्हाइट बॉडी का डला हुआ विल नॉट एंगेज एनीथिंग, एनी कॉर्टिकल ओवर हियर। कई बार कुछ लोग फोरामन रीजन में लिंगुअल वॉल या लिंगुअल प्लेट को एंगेज करने की करके डालते हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस दैट इज अ टेक्निक जो मैं बहुत बहुत इमरजेंसी के अंदर यूज करता हूं, बट दैट शुड नॉट बी अ रेगुलर टेक्निक, दैट शुड नॉट बी रिकमेंडेड। व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड? क्योंकि क्या होता है जब आप मेंटल फोरामन के लिंगुअल में ये सोच के जाते हैं कि फोरामन तो बक्कल साइड में है और हम लिंगुअल जा रहे हैं, यू आर इन अ वेरी मच हाई रिस्क कि आप बक्कल साइड में आते हैं या लिंगुअल के अंदर किसी भी लिंगुअल आर्टरी को टच कर जाते हैं, देन इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर यू एज। सो आई विल नेवर प्रेफर कि आप फोरामन रीजन के अंदर उसको बाईपास करने के चक्कर में लिंगुअल साइड में जाएं। मैंडिबल पोस्टीरियर रीजन में मेंशन कर दिया मैंने आपको कि देयर आर लिंगुअल कॉर्टिकल, और यू कैन लिंगुअल कॉर्टिकल अगर हम माइलॉइड के नीचे जाते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज लिंगुअल कॉर्टिकल। अगर हम बक्कल साइड में एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बक्कल कॉर्टिकल। सम टाइम बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल दोनों ही एंगेज नहीं हो रही तो हम एक वाइड बॉडी इम्प्लांट बिल्कुल सेंटर में डालते हैं बाय एंगेजिंग द बक्कल एंड द लिंगुअल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, इट्स नॉट अ कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स, तो उसको हम स्ट्रेट लिंगुअल बोल।
और वाइड बॉडी बोलते हैं. अगर स्टेट लिंगुअल इज अनदर टेक्निक दैट वी विल लर्न इन द लेटर क्लासेस. बट दीज आर द 4 लोकेशंस, इधर बक्कल साइड और द लिंगुअल साइड. या तो हम बक्कल साइड में एक्सटर्नल ऑब्लिक रीजन एंगेज करेंगे या लिंगुअल साइड में माइलोहेड को एंगेज करेंगे. दिस इज योर माइलोहेड. या तो हम इसके नीचे एंगेज करते हुए आएंगे बोन को. दिस इज अनदर व्यू ऑफ द माइलोहेड. हम एक्सरे व्यू है जो नीचे से इसको यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे. This is your lingual cortical. This is your buccal cortical, lingual cortical. So this is when we do a full mouth implant cases. This is a pterygoid where we have placed. This is all the nasal floor engagements when we जो already ये conventional implant किसी का डला हुआ था. This is the sinus region. Either we can go trans sinus to engage the nasal floor, or we can put a wide body over here. So we prefer to put a wide body because trans sinus के लिए bone हमें अच्छी नहीं मिल रही थी, क्योंकि trans sinus में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है osteotomy को वापस ढूंढना. एंड दिस इज आई टोल्ड यू कि फोरामेन के आगे में आप या तो 2 इम्प्लांट डालोगे या 3 डालोगे. तो वी प्रेफर टू चूज 3 ओवर हियर एंड 2 इम्प्लांट पोस्टीरियर रीजन में. तो ये दोनों लिंगुअल कॉर्टिकल में एंगेज्ड है. ये आगे इंटरफोरामिनल रीजन में एंगेज्ड है. दिस इज पोस्टीरियरली टेरिगोइड में एंगेज्ड है. एंड दिस इज इंटीरियरली नेजल फ्लोर में एंगेज्ड है. दिस इज हाउ द लोकेशंस वर्क्स. डेंचर है ना आगे ना, देर बताएंगे. This is another example, pterygoid anteriorly nasal floor and nasal floor. This is how we are engaged. Again, these are in the basal bone because already 27 millimeter implants and nasal floor is engaged. पीछे pterygoid, यहाँ पे palatal bone is engaged. This is a wide body, but I mentioned foramen region है, so you can put a wide body over here. This is again pterygoid, nasal palatal bone, nasal floor, palatal to bone to nasal floor engagement है. This is nasal floor anterior region में. एंड पीछे आपका टेरिगोइड एंगेजमेंट. लोअर में इंटरफोरामिना में आपके एंगेज्ड है, लिंगुअल कॉर्टिकल एंगेज्ड. So the question arises, why we choose these locations? Because maxilla is a distributing unit and mandible is absorbing unit. तो मैक्सिला के अंदर सारा फोर्सेस आकर के वो पूरे स्कल में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय दीज पिलर्स. दीज पिलर्स आर नेजोमैक्सिलरी पिलर, जो मैंने आपको कैनाइन इमिनेंस का भी बताया था, ठीक है ना. दिस इज जाइगोमेटिक पिलर एंड पोस्टीरियर टेरिगोइड पिलर. और हम लोग सारे के सारे बोन जो है टेरिगोइड पिलर्स पे, जाइगोमा पे या नेजल फ्लोर के थ्रू डाल रहे हैं. दैट इज हाउ वी आर ट्रांसफरिंग द फोर्स टू द कंप्लीट मैक्सिला. Some contraindications हैं, especially osteophylitis, compartment syndrome, vascular. These are the major things only. Otherwise, you can do it. Smoking and the cardiacs are not that much contraindicated. So that is for today. Our next lecture we are going to take in the next class, which has already been informed. The next course, that is a fellowship course that is there in Vietnam. If anyone are interested, they can contact the team. We are coming to Vietnam. All the mentors are coming to the Vietnam. The fellowship, international fellowship course is there. And another course there is Mangalore College के अंदर है, Manipal College के अंदर, Manipal College of Dental Sciences, where we have a 3-day workshop in the college itself. Manipal के साथ में हमारा tie up है, तो वहीं पे हम लोग कर रहे हैं Fixed Cortex with the International Plan Master Academy. There's a fellowship course in Delhi as well. So all of you who are willing to join these courses where practical hands-on भी होता है patient के ऊपर, they are most welcome to attend. Thank you so much.